he started to give me the first lesson by saying, "We are carrying out a pig butchering scam. First part is the relationship building. The end of the first phase is marked by the first transaction of the victim." I was literally put through some training. It's like streamline workers in the factory floor. I became one of those slaves. It's a war where trust is the target and lies are the weapons. A war behind walls of fear and deceit. ညီမတို့ဒါကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အလုပ်တွေကငရဲကန်းတစ်ခုလိုမျိုးဖွင့်ကျင်တယ်ပေါ့ငရဲကန်းထဲမှာသူတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့မကောင်းဆိုးအလုပ်တစ်ခုပေါ့ဒီဥစ္စာ And in the chaos of a civil war, criminal networks seize the moment. အကာအကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေကုတ်ကိုဒေသကိုကျွန်တော်တို့ကကားတာ An area of human trafficking and torture. वो इतना चिल्ला रहा था कि हमारे भी रास्ते खड़े हुए थे. Behind these walls, more than 120,000 people are forced to scam. We're estimating that in East and Southeast Asia, about $40 billion per year is lost to scams. Gangs have one clear aim: to make money, a lot of it, at any price. J'ai fait 32 ou 34 virements. The human cost is staggering. ဒီအလုပ်ကဘဝပေါင်းများစွာကိုပျက်စီးစေ This is a story of corruption, exploitation, and manipulation. Je m'appelle Mathieu Garnier, je suis français et depuis 2000 à peu près, j'habite au Japon. Je suis facteur d'orgue, qui sont des instruments d'église ou de salle de concert. Et j'ai été approché par une personne par mon compte Facebook. Je poste beaucoup sur les concerts à venir, sur le travail que je fais actuellement. Et cette personne m'a contacté en me disant qu'elle était américaine, qu'elle travaillait dans une base militaire américaine à Tokyo et qu'elle était croyante et puis que les instruments, la musique lui plaisait beaucoup. Puis les instruments qu'elle avait vus, elle les trouvait fabuleux. Elle voulait absolument me contacter, venir voir des concerts, écouter, voir ce que je fais. Il m'a envoyé une photo tout à fait correcte de son visage. Ouais, très jolie, peut-être 35-40 ans, tout à fait propre, tout à fait belle. Ça a commencé comme ça. मैं एक स्टोर के ऊपर जॉब करता था वहाँ डेटा एंट्री में मैं आइटम इंडेक्स करता था और वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह थे दिल में था कि कैसे भी करना है एक दफ़ा बाहर ज़रूर जाना है कहीं जॉब के लिए तो साथ जो दोस्त था उसने बताया कि मेरे ऐसे कज़न है वो थाई के अंदर आईटी डेटा एंट्री की जॉब देते हैं हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया हमने इंग्लिश में उनको छोटा सा इंटरव्यू दिया उन्होंने हमारा वीज़ा लगवा के दिया हमारी टिकटें करवाई टिकटों के पैसे भी हम लोगों ने दिए वीज़े के पैसे भी हम लोगों ने दिए हमने अपने एजेंट की बात मानी हम फिर पाकिस्तान से रवाना थाईलैंड हुए फिर एक शौक़ था एक नया नया जुनून था कि हम जाएं और अपना इस मुस्तकबिल थोड़ा सही करें En 3-4 mois, presque tous les 2-3 jours, il y avait un message.
Elle savait que j'étais marié, elle savait que j'avais un petit peu des problèmes privés, que j'avais aussi quelques problèmes professionnels avec mes frères. Elle me réconfortait. Donc c'est vrai que ça devenait agréable de parler parce que j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui me comprenne. Mais il n'y avait aucun argument pour m'attirer sexuellement. Elle m'a jamais envoyé de message en disant « Ah, je t'aime, je suis fou amoureux de toi ». Il n'y a absolument rien de ça. C'était toujours petit par petit, petit par petit. मायसोत जाने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं। जब हम वहाँ मायसोत पे उतर गए तो या फिर हमारे को एक बंदा लेने आया था वहाँ, जहाँ पे जाके उसने गाड़ी रोकी। वहाँ एक छोटा सा रिवर था, तो वहाँ पे एक कश्ती भी थी जो इसमें उसने हमारे को बिठाया और उस किनारे पे बस लगा के सामने ऊपर हम चढ़े तो ऊपर गाड़ी थी। वहाँ हमें बहुत ज़्यादा हमारी हालत बैंड हो चुकी थी कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। हमें ये पता ही नहीं है, वहाँ अंधेरा गुप है, ऐसा था जंगल जंगल इलाका, तो सामने लाइटें नज़र आ रही थी। बोला था ये आपकी कंपनी है। वो तो फिर बाद में पता पड़ा था कि हम गैर कानूनी किसी मुल्क के अंदर आ गए। थाईलैंड का टिकट है हमारे पास और हम बर्मा के अंदर हैं। वहाँ मैं गेट पे कुछ चाइनीज़ लेने आए। अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमारे से सवाल जवाब हुए, हमारी टाइपिंग वगैरह चेक की। उन्होंने हमारे को साफ साफ कहा अब अपने फ़ोन जमा कराएं, अपने पासपोर्ट जमा कराएं। ऐसी वही सब चीज़ हमारी छीन चुके थे। हमें ये कहा गया कि आप लोग फंस चुके हो, अब आप यहाँ से कभी भी नहीं जा सकते, तुम्हारा एजेंट जो है उसने तुम्हें बेच दिया है। तो वहाँ से पता पड़ा कि हम जिस कामों के लिए हम घूम रहे हैं वो काम स्कैमिंग के हैं। Trapped in Myanmar, a country where the military seized power in February 2021. Just 3 months after the National League for Democracy won national elections. The coup prompted many to join armed opposition groups. The country, now torn by a civil war, is split roughly 50-50 between the junta and rebel factions. The main national resistance is the People's Defence Forces, the PDF, an umbrella group fighting military rule. Other smaller groups, mainly representing ethnic minorities, control the border areas. Fertile land for crime to take root, especially along the Thai-Myanmar border. They call themselves the Justice Soldier, a group that brings together students, teachers, and other ordinary citizens. They're taking part in a 10-week training course run by the opposition. A few weeks ago, they knew nothing about fighting. But now, using wooden guns, they simulate an attack on an army outpost. Omu was initially hired as a translator in what he thought was a call centre.
အပင်ကျွန်တော်တို့လိုတေးသေးလေးစိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအပင်တူတွေအပင်တူဆိုအိမ်ယာဝင်းပုံစံမျိုးအပင်တွေစိုက်ထားပေးရတကယ်အထင်းဝင်လိုက်တာနဲ့တချို့နေရာမှာဆိုတကယ်ငရေကန်ပဲ रात वहाँ बिल्डिंगें बनती रहती थी चाहे बारिश आती है कुछ भी आता है और कंपनी के बाहर जो बाउंड्री है बाउंड्री के बाहर एक पूरी चारों तरफ गड्ढा किया हुआ था उन लोगों ने लकड़ी होती जिन पर कांटे होते हैं उन गड्ढों पे वो रखी हुई थी कि कोई यहाँ से जंप करेगा तो डायरेक्ट उन कांटों पे गिरेगा आर्मी के 15-15 16-16 साल के लड़के होते थे इतनी कम उम्र एज की लड़कियों के हाथों में राइफलें होती थी AK-47 होती थी ये राइफलें लेके वो ऐसे ऐसे आम जाम घूमते रहते थे जिसका दिल चाहता था उसे मारते थे खाना में सोई चलो दी तोला दी जगह पे लोग भी आ रहे नहीं आ सोई ना ते यार न से ते यार तों ने नहीं लाओ ऐ मामा लाइन खोए था फाइनल ने चट्टे फाइनल बाया शाबी लाइट दे लुदियाओ को चट्टे मायो ပြန်လွှဲပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာလဲချက်တင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လူတယောက်ကိုနည်းနည်းဟိုလှုပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဖုန်းကိုအဲ့လိုမျိုး10လုံးကနေ15လုံးလောက်ထိကန်ရတယ် हमारे से शेडिंग अच्छी नहीं होती थी मुझे तो उन लोगों ने फिर टिकटॉक में शिफ्ट कर दिया था वहाँ टिकटॉक में ये होता था मुझे डेली के 80 नंबर निकालने होते थे एक फ़ोन में 16-17 अकाउंट बने होते थे एला के नाम से ये एक मॉडल है ये AI के ज़रिए लोग है ना कैमरा बस खाली फेस चेंज कर देते हैं हर लड़की की पिक्चर के ऊपर वहाँ हमें दिन रात को तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता था हमें 4 घंटे 5 घंटे सोने को मिलता था कहता हूँ 50% अफ्रीका 40% चाइनीज़ और 10% जो था ना वो सारा फॉरेनर था जैसे कि पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश सीरिया Mattia is still messaging Kara, but after nearly half a year, she stops communicating and disappears. Days later, she pops up, saying she's been arrested in Caracas, Venezuela. She urgently needs help to send a shipment containing confidential documents to Japan. Alors bien sûr, ça paraît gros, mais il faut savoir qu'en ce moment, puis justement au mois d'août, il y avait les événements du Venezuela aux informations nationales. Elle crée son histoire avec cette actualité réelle pour la rendre beaucoup plus réaliste. Elle ne connaît que moi, elle me fait confiance à moi, ça fait 5 mois qu'on se parle tous les jours, donc elle me demande si elle peut simplement m'envoyer la mallette. C'est fait par une entreprise spécialisée pour documents ultra sensibles, en relation avec le gouvernement américain, le gouvernement anglais, le MI6, la CIA, la FBI. Bon, ah ouais, d'accord, wow, c'est le James Bond là. On a l'impression que c'est sérieux, on a l'impression que c'est professionnel. Donc j'accepte. Le lendemain, je reçois un mail d'une personne qui s'appelle Monsieur Enoch. Je scanne mon passeport, je demande où c'est que j'habite, numéro de téléphone, très bien. Il me recontacte le lendemain et il me dit voilà, il y a un changement d'itinéraire et puis un changement de receveur, donc vous devez payer 4 000 €. Puis alors là, je saute au plafond, je lui dis qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Puis j'envoie tout de suite un mail à cette fille qui s'appelait Kara. Je lui dis écoute, je comprends pas, moi je peux pas payer 4 000 €. Et puis là ça commence. Et là ça commence. Ah mais attends, je comprends pas aussi. Tu sais, je ne sais pas ce qui se passe. Attends, je vais voir avec lui, je vais lui demander. Mais si ça se trouve c'est juste le protocole de base. Écoute, si c'est que 4 000 €, pour l'instant moi je peux pas parce que justement vu qu'on a fait cette mission secrète, j'ai pas d'argent, j'ai pas de carte de crédit, je peux pas avancer l'argent. Et ah bon, d'accord, très bien, bon. Bon, bah si c'est que 4 000 €, d'accord, ok. Je fais le premier virement. In the heart of the Netherlands, the city of Utrecht blends medieval charm with modern energy. It's here that Yihao has taken shelter. He was duped and ended up in a scam centre for more than 6 months. From day one, he was put under intense scrutiny.
senior members were going through my profile to see to do some, I don't know, maybe due diligence or to do some checking on me to see if I was a Mo, maybe sent by the police or anything like that. But once they figure out that I am clean and I was literally put through some training, and they said, okay, that's the day one for you, but now it is time for you to tell your friend, your family, whoever know that you were going to Thailand, to tell them that you are safe, and because the job is so demanding, you won't be able to talk to them frequently, but the job is very promising. I was only issued with a computer, no cell phones, no anything, because again, they have this let's say preventative measure to prevent someone like me to reach out to outside. It was I don't know, third day or fourth day, I was officially admitted into the office of the scam operation. The junior scammer would be encouraged to hand over the victims, alongside with the cell phone, of course, to the more experienced scammers who could milk as much as money as they can out of the victim. The scam they practice, the perpetrated, is called the pig butchering scam. In a pig butchering scam, criminals convince victims to invest increasing amounts of money over time. It is often an elaborate scheme built on trust and manipulation. Scammers spend weeks or months fattening up their targets with fake friendships, romances, business deals, or setups involving package deliveries and urgent payments. Every step is carefully calculated to build confidence and increase pressure. The scam continues until the victim is financially drained, the fraud is uncovered, or the scammers disappear. But behind the screens, the scammers are trafficked workers under constant threat. वो उनके ऊपर होता था, वो उनका मूड होता था कि जिस दिन सज़ा देनी है खतरनाक वाली तो सज़ा ऐसी देंगे कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जब मारने का टाइम आता था ना, तो वो 2 से 3 बंदों को लेते थे, उनके ऊपर सबके सामने मारते थे कि सब देखें और सब खौफ खाएं। वहाँ पे लड़कियों का भी आसरा नहीं करते थे, लड़कियों को भी बहुत बुरा मारते थे। अफ्रीका की कुछ लड़कियाँ थीं जिन्होंने बिल्कुल ही ना कर दी थी काम करने से। उन लड़कियों के साथ उन्होंने ऐसा कर दिया था कि बस उनमें सांस नहीं बची थी, उन लड़कियों में इतना मारा था उन्हें। अगर कोई ऐसा कोई टॉप लेवल में कोई अच्छा चल रहा है, कोई सज़ा नहीं मिलती थी, बाकी जो कस्टमर नहीं घेरता था, जिससे चेडिंग नहीं होती थी, सबको खड़ा करते थे, लाइनों से मारते थे, इलेक्ट्रिक शॉट देते थे। खाई तो चलो रोज़ कोलो नहीं है अलमियो ओ ऑर्डर नहीं जा रहे हैं ती टू जाए लो अलमियो नहीं सलो ली तो अलमियो नहीं सर खाने तो तैसी है ओ दी तो काया ला मैं तो भी रो दी मैं बोलो चीज़ है तो नंबर 2 तो अलाउ बे तो काया है अलमियो तो नहीं सर दूरी है मानो छो जा रो तो आई फी जा वो बोलो क्यों है तो आई जा पर दूरी बात उमा वो दाने मोने दा सी दाने ठोगा मो दाने मोने सब लेफ्ट ဖြတ်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါသုံးတယ်လေအဲ့လိုလက်ချောင်းဖြတ်တာဟိုလက်တစ်ချောင်းလုံးဖြတ်တာမဟုတ်လက်ဒီဟိုဒီ finger လေးကိုဖြတ်တာအဲ့လက်ချောင်းလေးကိုဖြတ်တာရှိအဲ့တစ်ချောင်းအဲ့တစ်ချောင်းကြီးဖြတ်တာရှိအဲ့လိုမျိုးတော့ဓာတ်တွေပါသုံးတယ်ထိုးလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဟိုတစုံတစ်ခုထိုးသိမ်းပြီးတော့တည်ရတူရလို့မရှိဘူးအဲ့လိုကြည်စက်တွေနဲ့ထိုးပြီးရိုက်လို့အဲ့လိုမျိုး
တွေးထွက်လုံးနဲ့တည်တာလည်းမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မျိုးအတွင်းကြည်ကြည်ပြီးတည်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲ The noose is tightening around Mattia. The shipment is stopped at several stages on its journey, each time with a new request for money, each time with more psychological pressure. The package is now said to contain $1 million in cash. Je tombe de l'étage là. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi je panique complètement. Vu que c'est de l'argent qui n'est pas déclaré, puis que ça vient du Venezuela, j'ai au-dessus de la tête Interpol, trafic de drogue, argent sale, puisque je suis le receveur. Mattia now borrows from his close family, close friends, and even acquaintances as the scammers posing as Kera ask for more and more money. Un ami qui me prête 150 000 € en me disant « Oui, de toute façon, je te fais combien? Tu vas me les rembourser ?» Je dis « Bien sûr, je te vais les rembourser. » Mon père qui me prête donc à peu près 300 000 €, j'étais persuadé que je ne faisais pas avoir. Et de plus en plus, avec toutes les sommes transférées, j'étais de plus en plus persuadé que c'était impossible que ce soit une arnaque. C'était tellement gros, les sommes étaient tellement importantes. C'est pas possible. J'ai fait 32 ou 34 virements dans plusieurs pays. La somme totale avoisine les 450 à 500 000 €. J'ai mes amis qui me voient dépérir. Je perds, je sais pas, une dizaine de kilos. Je dors plus. Mais alors vraiment, je dors plus. Yi Hao wasn't getting much sleep either. During the initial phase, there was no very cruel punishment, but just some sleep deprivation. So there was some bunk bed in the torture chamber. So I was handcuffed to the upper bunk. So I have to stand there for, I don't know, 16 hours straight. They put me in that phase for, I don't know, 7 days, 10 days, just being handcuffed there. So I lost my sense of time. The cartel gives him the choice to pay an exorbitant ransom. Once they received the solid confirmation from me that I want to pay the ransom and I want to get released, well, that's the real torture began. And they beat me up because they want more money. And the only way to convince my family is to make me suffer. But sometimes not even money can buy you freedom. I already learned from my co-worker, other scammers, that there is no honest among the thieves, and especially amongst the scammers. If you pay up the ransom, they would highly likely take the ransom and sell you to other cartels, other camps. It was some tough talk, like, well, you got yourself in big trouble, boy. We could sell you to the other camp just north of it, like 1 hour by ride, and in there, your organ might be harvested. But Yi Hao suggests another option, to help them with their bookkeeping. I was the golden boy in their eyes. I am really good at Excel spreadsheet. They do need someone like me who could manage their business in a more organized way. The boss of the organization was instructing me to make the book more smarter by displaying the daily wages of every scammers on daily basis. Yi Hao complies, but he has a secret plan. I prepared all of this because in some other day I could share this forensic type of work with journalists and other researchers. I want to them up. That's how I did it.
The spreadsheets that Yihao prepares reveal a cartel that is structured like a company, highly organised, efficient, and dedicated to making profit. At the top, criminal executives work with trusted associates who supervise team leaders. At the bottom, trafficked workers forced to do the dirty work and run the scams. The analysis of thousands of files reveals a hidden support system overseeing security costing more than $35,000, data leak and fake account management, which is nearly $500,000, money laundering, which requires a 20 to 25% commission. These spreadsheets use colour coding to track how different teams extort funds from some 200 victims. Nearly $460,000 in July, almost $500,000 in August, $700,000 in September, $300,000 in October, and more than $500,000 in November. In total, Yihao's syndicate alone generates over $2.5 million in revenue over 5 months, and it is just one of many such cartels. The documents also use code words. A tea break, for example, refers to brokerage fees, the amount paid to any middleman or agent who brings new trafficked workers to the scam centres. A refund occurs when a scam victim contacts the police just in time to freeze the account controlled by the cartel. Security is the bonus given to guards after a failed escape attempt. Fighting fine is compensation given to local authorities, in other words, corruption and bribery. The United Nations Office on Drugs and Crime has investigated these criminal networks in depth. We're talking about tens of billions and potentially hundreds of billions of dollars per year that are generated by that scam industry at the global level. We believe it rivals most other forms of criminality at this point, including the proceeds from the drug trade, for example, which traditionally is the most lucrative type of criminality here in this region. You could call it like a cancer that is spreading here in Southeast Asia and that is increasingly affecting other parts of the world. They are the first ones to adopt things like artificial intelligence for their operations. I'm heartbroken that you're doubting my tension. I want to reassure you that I'm real. I don't have anything to hide from you. We're talking about deepfake videos, people being called by family members or authorities, not knowing that they're actually talking to scammers rather than people that are very close to them. And the scamming networks have global ambitions. We're seeing criminal groups from this region operating in places like Eastern Africa, Latin America, Eastern Europe, setting up either scam operations in these places or creating connections with criminal groups operating there. Cartels, for example, in Latin America, Yakuza groups in Japan, organized crime groups that are more established in other parts of the world. The Border Guard forces, the BGF, allied with the military junta, control the area of Myanmar, where most of the scamming centres are based. Game sort body Eddie Hallo, Nali Hade. General Miji, not a general the Miji, not a Talabala, the Nipala, so that through Piama Vashida. The Mijima, South of Piama. This the Matea Mahuta Lota, Kagwe, people to General Elota Mahobu. General Dita. General Dita and Dita Piru, a shame home years on a general, a same year mazage in a 2 tests in a Sanata Pura general, people in will pick or get a pite. Yihao believes they know exactly what is going on. I went to the gate of the camp. It was a military-looking figure. I could say this with the utmost confidence that the badge on his shoulder is the badge with the BGF.
It takes Mathieu almost a year to find out his greatest fear. Et je tombe sur un site où il y a la même photo d'une femme qui s'appelle Kera Gibson et qui habite aux États-Unis. Je prends contact avec cette personne. Elle me répond du tac au tac. Ah bonjour, écoutez, je vous connais pas. Moi, j'ai jamais été au Japon. Je suis jamais allé au Japon. Puis je suis pas au Venezuela. Je sais pas qui vous êtes. Et puis peut-être qu'on m'a volé les photos. Ah la douche. C'est là où j'ai trouvé. Je me suis fait avoir. Puis là, je dis c'est fini quoi. Voilà, c'est terminé. Moi, je vais aller me pendre. J'en ai fait 2. 2 tentatives de suicide, parce que j'étais complètement par terre. La fin est arrivée comme ça, puis je dirais la délivrance a commencé comme ça. Deliverance for Shiruz has yet to happen. His only hope to escape. But how? हम लोग अपनी उम्मीद बिल्कुल भूल चुके थे वहाँ से जाने की। दोस्त मेरे रोने लग जाते थे रातों को कि हम तो फंस गए हैं। वहाँ से घर वालों का प्रेशर स्टार्ट हुआ है। प्रेस क्लब के सामने दोपहरों में बारिशों में हमारा बैनर लेके खड़े रहते थे कि हमारे बच्चों के लिए रिहाई करवाएं। But Shiruz receives a lifeline from an unexpected ally. Okay. Please help us. I'm sorry. Don't cry. Inshallah. Assalamu alaikum. Inshallah. जी. Walaikum assalam. जी. The call is one of many honey takes. အားလုံးလွတ်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာပဲစိတ်ထဲကကြောက်သွားတဲ့ထင်ကိုယ့်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးလွတ်သွားမှာပဲ Free from the scam centre, just across the border. ကဘာပေါ်ကငရဲကန်တစ်ခုလို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ် हनी ने बहुत ज़्यादा आगे जाके बातें की हमारी हम वहाँ के एम्बेसडरों से थाई के एम्बेसडरों से थाई की पुलिस से 6 से 7 महीने तक तो हमारा कॉन्टेक्ट हनी से चलता निकालने के अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है वहाँ से But social media also has its upside. When a Chinese actor was taken into a scam centre after he thought he was going for a filming job in Thailand, the publicity storm got the government involved. China asked neighbouring Thailand to take the scam centres off the power grid. 中国、泰国、缅甸、老挝4个国家正在合力对泰缅边境地区的电诈进行集中打击。我们的任务就是斩断伸向人民群众的黑手，切除网络电诈这颗毒瘤。 Chinese authorities have recently sentenced 11 scammers to death for running a syndicate along the China-Myanmar border worth $1.4 billion and for killing over a dozen workers who disobeyed them. The crackdown also saw 7,000 trafficked workers freed. But it's a drop in the ocean. Many scam centres still thrive in Laos, Vietnam, the Philippines and Cambodia, the latter with tacit government approval. However, without the consent or acquiescence of the Cambodian state, these non-state actors would be unable to perpetuate the abuses that this report has documented. These accounts indicate that the police were aware of the human rights abuses taking place at scamming compounds and failed to put an end to such abuses. सुबह 7 बजे हमारे चाइनीज़ बॉस हमारे रूमों में आते हैं और कहते हैं गो गो होम गो गो। बर्मा शिप से हम थाई में गए। थाई आर्मी ने हमारे को रिसीव किया। रिसीव करके हम 26 बंदे एक ट्रक में चढ़ते गए और जाते गए। It's very dangerous. No, I don't know. I say Allah is good. Help me. And other people is very. My
6-7 people already company Pakistani. So please, Thai government, please, my friends, release, please. Freed, but traumatized, physically and mentally. But tens of thousands remain trapped. There are even raids inside Thailand to arrest scam crime bosses there. Sometimes there are even mass escapes, in a wild scramble for freedom across the river between Cambodia and Vietnam. फिर हम पाकिस्तान पहुँचे तो सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे, भाई वगैरह बहनें वगैरह सब एयरपोर्ट पे थे। सब बहुत खुश हुए हमें देख के। वो हमारे लिए ज़िंदगी का बहुत अच्छा और ऐसा दिन था कि हमें एक नई ज़िंदगी मिली थी।ရှက်လာအားလုံးကဟိုတယောက်ကိုတယောက်ဘယ်လိုလင်းရမလဲဘယ်လိုညာရမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုလူတယောက်ကိုတက်နေပြီးမှဟိုလူတယောက်ကိုခြာနေပြီးမှအပေါ်တက်ရမလဲဆိုတာမျိုးပဲတွေးနေကြတယ်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုမျိုးကိုကလူတယောက်ဒီလူတယောက်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးကိုကပေးဆက်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးအနေနာခံရမလဲဆိုရယ်ဟိုပုံစံမျိုးတွေဒီမှာသွားနေဟုတ်တော်လည်းရဲ့ဘာလို့ join လောက်တာဟိုအဓိကတော့လိပ်ပြလုံးရှင်ခံပြင်းနေရှင်းမှာဒေါသထွက် Well, give me a moment. Right. Every time I talk about it, I really want to concave their bloody head. Right. I will make sure that operation will be destroyed. Not destroyed is too much, let's say disrupted. But revenge comes with a price. Yihao fears members of the cartel will come after him. Voir des entreprises, d'avoir des carrément des buildings complets avec, je sais pas, peut-être des dizaines, des centaines de personnes qui sont torturées pour faire du scam. Elles sont victimes et elles créent les victimes. Elles ont les deux. Elles ont les deux. Moi, je suis juste une victime. C'est juste incroyable. Je pensais que c'était c'était une histoire hollywoodienne. Mais non, c'est une histoire réelle.